फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे थे और मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि y इज इक्वल टू 7x minus 2 whereas x holds 0, 1, 2, 3 and 4. Now let's see please. First of all, is it a function? Yes, it is a function or equation. Y is equal to 7x minus 2. Along right hand side it contains 7x minus 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे y हमारे पास अवेलेबल है. अब देखिए जो y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और 7x minus 2 जो था वो मेरे पास इंडिपेंडेंट है. x is my independent variable, 7 is the coefficient that is attached with my independent variable, and remember this 7 is a positive number, whereas the relationship between 7x minus 2 is negative. Minus 2 is constant, x is independent, 7 is your coefficient. Later on इसी coefficient को मैं slope भी कहूँगा. Y is equal to your dependent variable. Now, as you plug the values of x equals 0, 1, 2, 3 and 4 separately, you will get a specific value of y. तो अपनी नोटबुक पे इसको x की तमाम वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद y की वैल्यूज को ड्राइव कीजिए और जैसे आप y की वैल्यूज को ड्राइव करते हैं तो हमारे पास इन वैल्यूज को इन ग्राफ के ऊपर देखने से ये जो ग्राफ आपके पास आ रहा है ये एक पॉजिटिव लाइन है. इस पॉजिटिव लाइन को हमने देखा तो इस फंक्शन का कर्व जो था मेरे पास ये इंक्रीजिंग कर्व था. लेट्स सी प्लीज. If you plug the values in x, you will get definitely negative values as well as positive values. जब आप negative values कहते हैं तो यही वजह है कि आपको इस ग्राफ के डाउनवर्ड मींस नेगेटिव साइड पे भी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ गई और जैसे इसको आप पॉजिटिव साइड पे देखते हैं तो ये अपवर्ड स्लोपिंग जो है आपके पास है. फॉर एग्जांपल, लेट आई प्लग 7 times 0, डेफिनेटली 0 हो गया तो y की पहली वैल्यू मेरे पास -2 आ गई. When I plug x is equal to 1, then it is 7 times 1 is 7, -2 is equal to 5. तो y की दूसरी वैल्यू मेरे पास 5 आ जाती है. When you plug the value of x equals 2, then 7 times 2 is 14, -2 y is equal to 12. And next 3 and 4 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. So x की जो मेरे पास वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4 and 5. These are along horizontal axis or x axis. Whereas derived value जो थी जिनको मैंने derive किया था, these are along vertical axis और ये vertical axis पे 0, 6, 12, 18, 24 और 30 values है. Now please take a combination. When x is 0, then y is -2. My first combination is 0 and -2. When x is 1, then y is 5. My second combination is 1 and 5. When x is 2, then y is 12. My third combination is 2 and 12 and so on. तो इन combinations को apply कीजिए तो जैसे आप इन जो points को join करते हैं तो आपके पास एक curve आता है जिसको आप upward slope देख रहे हैं, that is a function. Anyhow, for each the value of x, there exists only one value of y. You can see. और इसी से आप इसको फिगर को एनालाइज कर सकते हैं. Let's see please. A function can also be called a mapping or transformation. The notation f of x implies that the set x is mapped into a set y in the function. For example, y is equal to function of x1, x2, x3, x4 and so on, xn. Whereas in mathematics, the symbols of f, psi, t, f of x, g of x, etc. These represent the functions. लेकिन commonly हम जिसको function से express करेंगे, that is f. और might be sometime आप इसको g से भी express कर दें. Anyhow, ये तो presentation होती है किसी भी चीज की. आप किसी भी value को function को f के साथ express कर सकते हैं. Now please come to the page number 4.
Economics, different letters are used such as C is your cost or consumption, Y is your income, S is for savings, Y is for income and so on. ये जैसे जैसे हम इनको यूटिलाइज करेंगे मैं आपसे अर्ज कर दूंगा और आप इनको नोट कर लीजिएगा. Very much important discussion for the types of functions. Now, what are the types of functions? कुछ इनकी टाइप्स आपने वेरिएबल्स में पढ़ी थी जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते थे. इट इज फंक्शन और इस फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं तो इस फंक्शन में हम ऑलमोस्ट ये जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको प्रोनाउंस करता हूं और लेटर ऑन इन्हीं को फिर डिफाइन भी करूंगा. फर्स्ट वन, इट इज increasing function. Number second, it is decreasing function, single valued function or multi-valued function. Number fifth is your explicit function. And number sixth is implicit function. Number seven is inverse function. And number eight is the constant function. Number nine is the linear function. And number 10 is quadratic function, whereas number 11 represents the logarithmic function and number 12 represents exponential functions. जरा इसको चॉक डाउन कर लीजिए और इसको जरा एनालाइज कीजिए, फिर इसकी मैं डिटेल की तरफ चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर हमें कोर्स आउटलाइन मिल सकती है प्लीज, और ये नोट्स जो है अभी बना रहा था तो अभी कंप्लीट नहीं, अदरवाइज मैंने आज आपसे शेयर कर देनी थी. मुझे उम्मीद है अजीब मैं नोट प्रोवाइड करूंगा आपको. मुझे उम्मीद है कल संडे है, काफी सारे मैंने जो पेंडिंग टास्क है उनको कंप्लीट करने हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कल आपको इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूंगा, नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा या बिफोर नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट क्लास, आई थिंक आपने इनको देख लिया है और मैं इसकी डिटेल थोड़ी सी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस माय फर्स्ट फंक्शन and this is increasing function. When the relationship between two variables is such that if the value of one variable changes, the value of other variable also changes, but in the same direction, that is known as increasing function. It means if one value is increasing, other value must be increased. In other words, when there is a positive correlation between two variables, it is indicative of an increasing function. For example, y is equal to 13 plus 2x. ये क्लास में आपसे जितने भी फंक्शंस हैं इनको मैं रीड करता हूँ. लेटर ऑन ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कम्प्लेक्सिटीज आ जानी है. इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि एक एक फंक्शन को, एक एक वैल्यू को एनालाइज क्या करें और एक एक वैल्यू को प्रॉपरली अंडरस्टैंड क्या करें, फोकस क्या करें इसके ऊपर. y इज इक्वल टू 13 प्लस 2x. इसको अगर आप अब देखें फंक्शन सी में, मगर इस बार कांस्टेंट पहले आ गया और कोएफिशिएंट बाद में आ गया. सबसे पहले देखिएगा y इज इक्वल टू 13 प्लस 2x. इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन. अगर ये पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज इंडिपेंडेंट की भी और आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पॉजिटिव वैल्यूज है. It contains two sides, definitely left hand side and right hand side. Along right hand side, it contains 13 plus 2x. If you decompose this factor, it is actually 13 plus 2x, whereas 13 is a constant और इस constant को मैं अब intercept भी कहता हूँ. What is an intercept? इसको भी मैं अभी evaluate करता हूँ. Plus 2x is coefficient attached with the x that is your independent variable. If x is your independent variable, 2 is the slope or it measures the relationship between dependent and independent variable. एक एडिशनल बात है, आप जरा इसको अभी सुन लीजिए. ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होता क्या है? Actually, independent variable measures how much change due to independent variable brings how much change in the dependent variable.
दोबारा सुन लीजिए, change in dependent variable due to change in independent variable, that is a mapping of function or the objective of the function. तो हम इसमें किसी एक वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है दूसरे वेरिएबल पे देखते हैं, वो इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है किसी और फॉर्म में. नंबर सेकंड, y is equal to 9 plus 6x plus x square. क्या इसमें डिफरेंस आया? इसमें डिफरेंस ये आया कि एक इसमें वेरिएबल जो था उसकी फॉर्म चेंज हो गई और x के पार अगर आप देखें तो x के पार में x स्क्वायर आ जाता है. इसको भी मैं एक स्पेसिफिक नाम दूंगा. मगर इससे पहले जरा गौर कीजिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि y इज इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं. मेरा ख्याल है कि कुछ हमारे फेलोज कहेंगे 2 और कुछ हमारे फेलोज कहेंगे 3, मगर फैक्ट ये है कि इसमें 2 वेरिएबल अवेलेबल हैं, x और y. x किसी फॉर्म के साथ तो मौजूद है मगर वेरिएबल एक ही है, इसलिए इसके इस कॉम्बिनेशन को मैं सिर्फ 2 यानी डबल वैल्यूड फंक्शन भी कहता हूं. इन 12 जो आपके फंक्शंस हैं इसमें बहुत सारी टाइप्स मौजूद नहीं है, मगर हम सिर्फ चूंकि इंट्रोडक्शन है देख रहे हैं इसलिए इन टाइप्स को जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं. So these are the examples of increasing functions. Since an increase or decrease in the value of x independent variable causes the increase or decrease in the value of independent variable, that is y. Most of the equations of the quantity supplied used in economics, such as qs is equal to 2 plus 3p, qs is equal to 17 plus 0.2p. ये क्लास मैंने विलिंगली इन एग्जांपल्स को और इन पेजेस को इसमें शामिल किया है. Now let's see please. Now there are variables independent and dependent. Definitely इसमें कोई चेंज नहीं, मगर इस y की जगह आप QS यानी क्वांटिटी सप्लाई को देखते हैं और इंडिपेंडेंट की जगह आप प्राइस को देखते हैं. P stands for price. Let's see please the function or the working of a coefficient. Coefficient actually that explains how much change the independent variable brings in the dependent variable. If 2x is there, when I plug the value of x, sorry, it was 3p. When I plug the value of p is equal to 2, then it becomes 6. When I plug the value of p, 5, it becomes 15. And when I plug the value of p 20, it becomes 60. Anyhow, this coefficient brings the changes in the values of independent variables. So quantity supply is dependent upon price. It is a positive relationship. It is logical. When there is increase in price, your producer or supplier is willing to more and more. It is the same direction. When there is reduction in prices, your supplier is no more willing to supply more and more. Anyhow, these examples are of increasing functions. Number second देखिए जिसको आप कहते हैं decreasing functions. When the relationship between two variables is such that a change in the value of independent variable causes the opposite change in the value of dependent variable, it is known as a decreasing function. Or when there is negative correlation between two variables, it indicates a decreasing function or equation. Let's see class. Y is equal to 16 minus 3x. There is negative relationship between y and x. When there increase in x, there will be decrease in y. And whenever there is decrease in x, there will be increase in y. Y is equal to 16 minus 3x. Y is equal to 4 minus 4x minus x square. These are the examples of decreasing functions. Since an increase or decrease in the value of x causes the decrease or increase in the value of y. Most of the equations of quantity demanded used in economics, for instance, QD is equal to 5 minus 2P.
QD is equal to 4.5 minus 2.7p. Look at that, there is negative relationship between price and demand. When price of commodity increases, you are going to demand it low. And whenever the prices are low, you are going to increase your demand for that particular product. So these are the examples of the decreasing functions. Let me discuss the third value or third type of your function. It is single valued function. As its name signifies, it may be a function with a single value. Yeah, sure. Single value function is a function in which there exists one-to-one correspondence between two variables. It is known as a single value function. The following equations are the good examples of such functions. इनके examples को देखिए, whereas y is equal to 8x. Now there is independent of one variable x, or c is equal to 17 plus 8q plus 2q square. इसमें भी एक ही वेरिएबल है, जैसे मैंने अर्ज किया था, q मौजूद है. Now, number 4 is the multi-valued function. Relation or an equation in which there is a greater than one-to-one correspondence between two variables is referred to as a multi-valued function. In the classical terminology, for example, y is equal to plus minus under root 5x or y square minus 2x square is equal to 0. अब देखिए क्लास, माइनस है, इसमें डिफरेंस है, मगर आपको कंफ्यूज कर सकता है. ये फंक्शन है, इसमें भी तो x वेरिएबल है और इसमें y वेरिएबल है. अगर इसको कहें तो इसको आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, और अगर आप इसको कहें तो जस्ट आप इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है. बट देयर इज अ डिफरेंस. एक्चुअली इट इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन. As you subtract the values of independent and dependent variable, answer is somewhat different. When you plus these values, answer is different. तो इसका मतलब ये है कि इन फंक्शन से आपके आंसर्स जो है डेफिनेटली ये चेंज होते हैं. Another form, y square minus 2x square. यहाँ पे भी इस फंक्शन में जो प्रॉपरली इसकी पार्ट्स दी गई हैं वो अब चेंज है. लास्ट टाइम आपने लीनियर पढ़ा था और अब ये क्वाड्रेटिक है. अभी मैं इस लीनियर क्वाड्रेटिक को इतना कॉन्फिडेंस से प्रोनाउंस करना नहीं चाहता था, मगर इसकी फिर नेक्स्ट जो ना हमारे पास कुछ टाइप आ गई जिसमें हम इसको कॉन्फिडेंस से डिफाइन करते हैं. नंबर 5, एक्सप्लिसिट फंक्शन. मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए थोड़ा सा नया फंक्शन है. मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ फंक्शन in which the dependent variable is written on the left hand side of the equation sign. जी वालेकुम अस्सलाम. सर वो स्टूडेंट कुछ वेट कर रहे हैं बाहर, उनको जरा ऐड कर दीजिए. जी जस्ट प्लीज मुझे sorry. Explicit function, most usual form of a function in which dependent variables written on the left hand side of the equation sign and relate to a set of independent variables on the right hand side. That is known as explicit function. Y is equal to 7 minus 2x. ये examples आप पहले पढ़ चुके हैं और इन्हीं examples को आप explicit function कहते हैं. Explicit function means where your values of independent are expressed explicitly. ठीक है ना, आपको ये अपनी अपनी प्रॉपर प्लेसमेंट को ये शो कर रहे हैं. y is equal to 7 minus 2x. राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंडेंट वेरिएबल है. ये अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं. लेट वी डिफरेंशिएट implicit functions. A function expressed in such a way that there is no dependent variable, but an interdependence between the variables is an implicit function. For example, y square plus x square minus 1 is equal to 0. Nothing is along your right hand side. Everything is along your left hand side. और किसी एक डायरेक्शन पे आप तमाम वेरिएबल्स को मूव करते हैं, इससे हमारा फंक्शन जो होगा that will become implicit function, where values of functions are expressed implicitly.
or there may be a mixture x square minus x y square plus 5. अब इनमें change आ गया is equal to 0. Right hand side contains nothing. It is implicit function. All right. Differentiate between explicit function and implicit function clearly. Our next type is inverse function. When the dependent and independent variables of such a functions are interchanged, the result is an inverse function. और इस इनवर्स फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, जस्ट सिर्फ उसके आप इनवर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं. x इज इक्वल टू फंक्शन मींस इनवर्स फंक्शन ऑफ y. देखिए लास्ट टाइम इंडिपेंडेंट x था, अब की बार इंडिपेंडेंट y है, और ये y आपको जैसे ही f-1 लिखते हैं तो मेरी बात ये फिर जो है वो ऑपोजिट हो जाती है. फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन वी फॉलो द प्रोसीजर गिवन बिलो. अब इस प्रोसीजर से हम इसका जो है वो इनवर्स भी वो कंक्लूड कर सकते हैं. क्लास मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की इस सेकंड डिस्कशन में आपने देखा होगा कि अभी सिर्फ हम x और y को ही इवेल्युएट कर रहे हैं, तो इसके कितने एस्पेक्ट्स निकल रहे हैं. लेटर ऑन जैसे मैंने अर्ज किया था यही चीजें कम्प्लेक्स हो जाएंगी और आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सिंपल जो हमारी ये डिस्कशन है इसको आज से ही प्रॉपरली जो है ना वो प्रिपेयर कीजिए ताकि लेटर ऑन हमें कोई इशू जो है ना बाकी ना रहे. So let's see please. Y is equal to 5x plus 20. Now we are going to interchange. Actually 20 is constant, 5x is your independent variable with coefficient, y is your dependent variable. If you interchange, I'm going to transform y minus 20. Take your 20 to the left hand side of the equation. ये right hand side से आप इसको left hand side पे ले जाते हैं. तो जैसे इसको आप interchange करते हैं, I can write 5x is equal to y minus 20. Now I want to eliminate the coefficient attached with the x, that is 5. It is in multiplicative form. I can divide it by 5. जैसे मैं इसको divide करता हूँ 5 से cancel out हो जाता है. So dividing whole equation by 5. 5x over 5 is actually x. 5 cancel हो जाता है. Y over 5 is there and 20 over 5, that will be equal to 4. Now I can plug x is equal to 0.2 y minus 4, or simply it is a simple form of x is equal to f inverse into y. All right, I think so. आपने सिंपल सी कैलकुलेशन को बड़ी अच्छी तरह फॉलो कर लिया है. Now there is investment function as an example. और ये देख लीजिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको जस्ट यहाँ पे फेमिलियर करने के लिए लाई गई है. I stands for investment. Inverse function in term of R, whereas R is your rate of interest. Now there is another type. It is known as constant function. A function when it contains no variable, but it contains a constant. This is known as a constant function, where the value of y remains the same no matter what is the value of x is the independent variable. Resultant function is called a constant function. Y is equal to function of x is equal to c. C can be a number 5, 10, 20, 50, 100, anything, any number, that must be a constant. Now, where C is a constant, autonomous investment I naught is a good example of a constant function. क्या है जी autonomous investment? हमारा अभी क्राइटेरिया तो नहीं है कि हम इसको फॉलो करें, मगर for your interest मैं इसको just define कर देता हूँ. You know, it is a common practice in our society that there is a relation between investment and rate of interest. A part of investment is directly or indirectly related with your rate of interest. If rate of interest changes, your level of investment also changes. But a part of your investment is not directly or indirectly related with the rate of interest. It is autonomous investment.
इट इज नॉट रिलेटेड विद योर इंटरेस्ट रेट. वो इंक्रीज करे या चाहे डिक्रीज करे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है. दैट इज एक्चुअली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. Next is your linear functions and quadratic functions. What is a linear function? Any function that contains power of independent variable 1. It is known as linear function. A function y is equal to f of x of the form y is equal to ax plus b. It is a linear function because power of independent variable x is 1. It is not 2, it is not 3, it is not 4, and so on. It is known as a linear function. The following equations are the examples of the linear equations in economics. S equals minus 15 plus 2y, or QD is equal to 25 minus 7p. Both of the equations that represent there is one power independent variables. Linear function are graphically represented for straight lines. Now there is quadratic function. What is a quadratic function actually? A quadratic function is of the form ax square plus bx plus c. ये मैं यहाँ पे इनकी इन टाइप्स को डिफाइन करने के बाद अपनी बात को कंप्लीट कर दूं. क्वाड्रेटिक मींस टू. क्यूबिक मीन अगर एक फंक्शन क्यूबिक है तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर जो होगी वो 3 होगी. एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर देयर, उसमें आप चेंज करते रहते हैं फंक्शन की पावर्स को. एंड मेरे पास ये 11th नंबर पे लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसको हमने अपने स्कूल लेवल की डिस्कशन में बड़ी दफा पढ़ा था. Logarithmic functions. A variable expressed as a function of logarithm of another variable that is referred to a logarithmic function. Y is equal to log base power 10, base 10x, and y plus log ex is equal to ln x. It is commonly known as natural log. Any function with log or ln or log, it is known as a logarithmic function. We are not interested here actually for the solution of logarithmic functions or exponential functions. अभी हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और उसके बाद इनकी कुछ वैल्यूज को सॉल्व करना भी शेयर करेंगे. Now there is exponential function. The equation y is equal to a power x, y is equal to e power x. What is the difference between power cubic quadratic function and this exponential function? Look at that. The power of the exponential function is actually a variable, whereas a power of a quadratic function is 2, means a number. तो जिसमें पावर आपकी नंबर या कांस्टेंट है और जिसमें पावर आपकी वेरिएबल है और उसकी बेस भी ई है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू जो आपके इक्वेशंस हैं या फंक्शंस हैं. सो क्लास 12 जो थे मेरे पास इनकी टाइप्स थी और इन टाइप्स को भी मैंने आपसे शेयर कर दिया. These are the examples of exponential functions. As can be seen, one variable appears as a power of a fixed base, means a or e. If there does not exist a one-to-one correspondence or the functional relationship between two variables, then the relationship between two variables is known as a relation. For example, the equation y is equal to plus minus under root x. There are two variables. One of them it is x, another it is y, that is in the form of dependent variable. But what is the difference? X, that is an independent variable, it contains an under root, and you know the value of under root is 1 by 2. Plus minus indicates that there are two relations, negative and positive. Anyhow, आज की जो डिस्कशन आप कर रहे थे इसमें आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस को देखा और मेरी आपसे गुजारिश है कि इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को आप बड़ी डिटेल के साथ देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए. सो मेरी गुजारिश है कि ये जो नोट्स हैं, ये चंद नोट्स हैं, यानी 2 या 4 पेजेस हैं, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. आप अपनी
पहले वाले को जो लिटरेचर में पढ़ी होंगी या स्कूल लेवल की जो बुक्स हैं उनमें से इनकी डिफरेंट टाइप्स को देखिए, चूंकि मैं बार बार आप शेयर कर रहा हूँ, कमिंग क्लासेस में ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। हमने देखा कि कोर्स के जब आप मिड में आते हैं, अभी यही नहीं पता चल रहा होता कि इनकी जो वैल्यूज हैं क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं, क्या इनके प्लेसमेंट एक्यूरेट है या नहीं। हमें ये नहीं पता चलता कि ये एक्स जो है वो ठीक है इधर या लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे। सो मेरी आपसे गुजारिश है, इनकी टाइप्स को प्रैक्टिस कीजिए, ग्राफ को देखिए, वेरिएबल्स को देखिए, इनके टाइप्स को देखिए और इनसे अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाइए। मेरा ख्याल है कि आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं और मेरी प्रैक्टिस है कि जैसे जैसे आप मूव सर करेंगे जी ये थर्ड भी फोर्थ बहुत ज्यादा क्लास है में, सर, इतना ही काफी है। नहीं सर, थोड़ा सा आपको इसके साथ जो है ना वो फेमिलियर होना पड़ेगा, ये ज्यादा नहीं है। इसकी रीजन ये है कि मैंने इसको, आमतौर पे क्लासेस में होता ये है कि आपने माशाल्लाह बीबीए लेवल पे आ चुके, आमतौर पे क्लासेस में होता ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्कूल लेवल की चीजें हैं, ये आपने पढ़ी है। स्कूल लेवल में हमने वेरिएबल कांस्टेंट्स को देख लिया था, फंक्शंस इक्वेशंस को देख लिया था। हम डायरेक्टली बीबीए में इंटरेस्ट से बात शुरू कर देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से या प्रॉफिट के मॉडल से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए इसको जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। सो ये देखिए कि ये चीजें जो है वो आपके लिए हैं और इनको मैं जो रीडिंग कर रहा हूँ वो आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इस टाइम में बहुत कुछ और पढ़ सकते हैं।